Okay, so the previous video was partially created, it got stuck in between. So I will continue explaining the remaining of the story in this video. Tapashil, rupaye, paise. Tapshil means detail, ru is short form of rupaye, which means rupees, paise, paisa. Rogyas tapasल्या बद्दल. Rogi means patient, tapasne means to check. So to check the patient 5 rupees. सो रोगी की जांच करने के लिए 5 रुपये. दोनदा घरी येण्याबद्दल 4 रुपये. कमिंग होम ट्वाइस. सो कमिंग होम in this context it is really home visit. So 2 home visits 4 rupees. 8 वेळा औषध दिल्याबद्दल 3 रुपये. फॉर गिविंग मेडिसिन 8 times 3 rupees. 8 बार औषध दवाई देने के लिए 3 रुपये. एकूण 12, टोटल 12 rupees. कुल मिलाकर 12 रुपये. दिनू ते बिल कितीतरी वेळ वाचित होता. दिनू वॉज रीडिंग दैट बिल फॉर लॉन्ग. इन हिंदी, दिनू वह बिल बहुत देर तक पढ़ रहा था. तो एकदम मध्येच हसला. सो ही सडनली स्माइल्ड. वो अचानक से हसा. त्याला काय वाटले कुणास ठाऊक. काहीतरी विचार त्याच्या डोक्यात आला. कुणास ठाऊक मीन्स someone will know or no one will know. So we don't know what did he think. What thought came in his mind. डोक्यात आला. डोकं means head, विचार is thought. So some thought came in his head. So he had an idea. उसे क्या लगा पता नहीं. कुछ तो विचार उसके दिमाग में आया. घरी जाताना त्याच्या मनात कितीतरी विचार येत होते. While going home, he had many thoughts in his mind. घर जाते समय उसके मन में बहुत सारे विचार आ रहे थे. आपण आईची पुष्कळ कामे केली. I did lot of work for mother. पुष्कळ कामे means many different works I have done for mother. मैंने माँ की बहुत सारी कामे की हैं. मग त्याबद्दल तिच्या नावावर बिल का करू नये. Then why shall I not write a bill on her name or create a bill on her name. फिर उसके लिए उसके नाम पर बिल क्यों न करूं. मोठी गंमत होईल. पैसे मिळतील त्यांचा खाऊ आणू. गंमत इज फन. सो इट विल बी अ बिग फन. whatever money I will get, I will bring some snacks. बहुत मज़ा आएगा. जो पैसे मिलेंगे उसका कुछ उसके लिए उससे कुछ खाने की चीजें लाऊंगा. घरी गेल्यावर दिनू आपल्या खोलीत गेला. सो आफ्टर गोइंग होम दिनू वेंट टू हिज रूम. आणि त्याने एका कागदावर आपल्या आईच्या नावाने एक बिल तयार केले. अँड ऑन ए पेपर ही क्रिएटेड अ बिल ऑन हिज मदर्स नेम. और उसने एक कागज पर अपने माँ के नाम एक बिल तैयार किया. तपशील डिटेल्स. आज बागेतून फुले आणल्याबद्दल. बाग इज गार्डन, फुले इज फ्लॉवर. सो फ्रॉम ब्रिंगिंग फ्लॉवर्स फ्रॉम अ गार्डन टुडे. 12 पैसे 12 पैसा. आज बाग में से फूल लाने के लिए 12 पैसे. बाळाला 2 तास सांभाळण्याबद्दल. बाळ मीन्स बेबी. 2 तास 2 hours. सांभाळणे टू टेक केअर. सो फॉर टेकिंग केयर ऑफ द बेबी फॉर 2 hours. छोटे बच्चे को 2 घंटे संभालने के लिए. शेजारच्या काकूकडे निरोप घेऊन गेल्याबद्दल. शेजारची काकू मीन्स आंटी फ्रॉम द नेबरिंग हाऊस. निरोप घेऊन गेल्याबद्दल. फॉर टेकिंग ए मेसेज टू हर. सो कन्वेइंग मदर्स मेसेज टू अ आंटी इन फ्रॉम द नेबरिंग हाउस. सो पड़ोस की चाची को संदेश देने के लिए और माँ का जो भी कहना था वो जाकर बोलने के लिए 25 पैसे.
वाण्याकडून साखर आणण्याबद्दल, फॉर ब्रिंगिंग शुगर फ्रॉम दी ग्रोसरी स्टोर. वाणी इज ग्रोसरी शॉपकीपर. सो किराना के दुकानदार से चीनी लाने के लिए 12 पैसे. एकूण 1 रुपये 49 पैसे. सो इन टोटल 1 रुपी 49 पैसे. आई बसत असे त्या खोलीत दिनू हळूच ते बिल ठेवून आला. आई बसत असे, मदर यूज टू सिट, त्या खोलीत, इन दैट रूम. सो द रूम इन विच मदर यूज टू सिट, दिनू स्लोली वेंट एंड केप्ट दैट बिल. माँ बैठती थी उस कमरे में, दिनू धीरे से जाकर वो बिल रख कर आया. दुसरे दिवशी सकाळी दिनूला उषाजवळ बिलाचे पैसे व एक कागद दिसला. नेक्स्ट डे मॉर्निंग दिनू फाउंड दी मनी फॉर द बिल and one paper near his pillow. Ushi means pillow. So Usha जवळ is near pillow or near the head when someone is sleeping. So दूसरे दिन सुबह दिनू को उसके सिर के पास बिल के पैसे और एक कागज दिखा. तो पैसे भराभर मोजून रुमालात बांधू लागला. So he quickly started counting the money and tying it in the handkerchief. वह पैसे जल्दी जल्दी उसे काउंट करने लगा, सिक्के गिनने लगा और एक रुमाल में बांधने लगा. कागद हातात घेऊन पाहतो तो काय, बट वेन ही सॉ दॅट पेपर, हातात घेऊन पाहतो, टूक दॅट पेपर अँड सॉ, ते आईने त्याच्या नावाने केलेले बिल होते. इट वॉज अ बिल ऑन हिज नेम रोड बाय हिज मदर. वह उसके माँ ने उसके नाम पर किया हुआ बिल था. तपशील, डिटेल्स. लहानपणापासून आतापर्यंत वाढविल्याबद्दल. वाढवणे मीन्स रेस. लहानपण चाइल्डहुड. आत्तापर्यंत टिल नाव. सो फॉर रेझिंग टिल नाव फ्रॉम चाइल्डहुड. काही नाही, नथिंग और नो चार्जेस. चारदा आजारीपणात दिवस रात्र जागून काळजी घेतल्याबद्दल. काळजी घेणे टू टेक केअर. सो फॉर टेकिंग केअर 4 times इन सिकनेस. दिवस रात्र जागून, बाय बिंग अवेक डे अँड नाईट इन हिज सिकनेस. काही नाही, नो चार्जेस. सो इन हिंदी 4 बार वह जब बीमार था तब दिन रात जगकर उसकी सेवा करने के लिए या उसका ख्याल रखने के लिए. कुछ भी नहीं. गोष्टी सांगून करमणूक केल्याबद्दल. बाय टेलिंग स्टोरीज. सो कहानियाँ कहकर उसका मनोरंजन करने के लिए. कुछ भी नहीं. वाचायला शिकवल्याबद्दल. फॉर टीचिंग हाउ टू रीड. नथिंग. पढ़ना सिखाने के लिए. कुछ भी नहीं. एकूण काही नाही. टोटल नथिंग, नो चार्जेस. आई, मदर. दिनूच्या डोळ्यात एकदम पाणी आले. डोळ्यात पाणी येणे लिटरली मीन्स टू कम वॉटर इन आईज, अँड एज यू नो द वॉटर मीन्स टीयर्स. सो दिनू हैड टीयर इन हिज आईज. दिनू की आंखें भर गई. त्याचा गळा भरून आला. हिज थ्रोट गॉट चोक्ड बिकॉज ऑफ द इमोशंस. उसका गला भर आया, मतलब वो बोल नहीं पा रहा था, ऐसे हो गया. त्याच्या हातातला कागद गळून पडला. द पेपर इन हिज हैंड गॉट ड्रॉप्ड. उसके हाथ में से कागद छूट गया. रुमालात अर्धवट बांधलेले पैसे घेऊन तो तसाच आईकडे आला. सो ही वेंट टू हिज मदर इमिजिएटली और इन दिस सेम स्टेट विथ द मनी halfway tied in the handkerchief. सो रुमाल में आधे अधूरे बांधे हुए पैसे लेकर वो वैसा ही माँ के पास गया. काही न बोलता त्याने आईला पैसे परत केले. विदाउट सेइंग एनीथिंग ही रिटर्न मनी टू हिज मदर. कुछ भी बोले बिना उसने माँ को पैसे वापस किए. व तो आईच्या मांडीवर डोके ठेवून स्फुंदू लागला.
स्फुंदू लागणे started sobbing. So he kept his head on mother's lap and started sobbing. तो वो माँ के गोदी में जाकर गोदी में अपना सिर रखकर रोने लगा. आईने दिनूला कुरवाळले व त्याचा मुका घेत म्हणाली. So mother caressed him or cuddled him and took his kiss and said. So माँ ने उसे प्यार से गले लगाया और उसे चूम कर कहने लगी, तुझ्या बिलाचे पैसे मिळाले बरं दिनू. सो आई गॉट द मनी फॉर योर बिल दिनू. दिनू, तुम्हारे बिल के पैसे मुझे मिल गए. सो ही अंडरस्टूड द इम्पॉर्टेंस ऑफ हिज मदर, द इम्पॉर्टेंस ऑफ सो मेनी थिंग्स शी हैज़ बीन डूइंग फॉर हिम. तो उसकी माँ उसके लिए जो कर रही थी उसका महत्व उसे पता चल गया. सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, आईच्या मायेला अनमोल किंमत असते. सो द लव यू गेट फ्रॉम योर मदर इज इनवैल्यूएबल. माँ का प्यार अनमोल होता है. सो आई होप यू लाइक दिस स्टोरी विच इज़ ए very short story but has a profound meaning, and I also hope that it is helping you in Marathi reading and listening. In this description of this video I will give the link of playlist of the sessions I have created so far, so you can watch all the videos, and also visit my website learnmarathivithkaushik.com so that you can learn many other things in Marathi and Gujarati learning. So that's it for today's video. See you next time. Bye.